Hello students, my name is Poonam Dua. I am from Ement Education Academy of Literature. Our academy provides online and offline coaching to various literature students specifically for IGNOU and DU. Today I am going to discuss few important RTCs of MEG 01 British Poetry. Yes, British Poetry, one subject which many of the students find very difficult to solve. If you want elaborated sessions, you can contact to join our classes too. The contact detail will be given in the end of the video. Let us start the video now. आपके टोटल 10 ब्लॉक्स हैं ब्रिटिश पोइट्री में एंड देर कैन बी एनी काइंड ऑफ एग्जाम पैटर्न. इट कैन बी only RTCs, it can be RTC plus essay questions. So questions will be asked from these 10 blocks only. Please go for a deep study of each and every poetry. This is my suggestion. Many a time students want to go for the shortcuts. Please do not apply any shortcut. This is the reason that many of the students are not able to clear this particular subject. सो अगर आप पोइट्री बहुत अच्छे से समझेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर पोइट्री की हर लाइन के मतलब को समझा जाए, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड as many poetries as you can. So you will start your answer with these lines, like from where the excerpt has been taken. You can see the excerpt written over here in red. Now sire, quoth he, when we flee from the beams for goddess love. This excerpt has been taken from Canterbury Tales, and after that you will write something about Canterbury Tales, when was it published, by whom it was written. So you will give some brief information about Canterbury Tales. Canterbury Tales is a collection of 24 stories that runs to over 17,000 lines, written in Middle English by Geoffrey Chaucer between somewhere 1387 and 1400. And this particular phrase has been taken from the Nun's Priest Tale, and Nun's Priest Tale is one of the Canterbury Tales, a narrative poem that is a beast fable also, animals की story है. So after that, after giving the introduction, you will start explaining the lines. अगर आपको एग्जैक्ट लाइन्स समझ नहीं आ रही हैं, बट स्टिल यू हैव सम आइडिया दैट फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन टेकन, एटलीस्ट राइट समथिंग, डू नॉट लीव इट ब्लैंक. Here I am explaining what to write about these particular lines. These are taken from the recent assignment. This tale is about a poor widow who lives in the cottage with her 2 daughters. The major character of this tale is Chanticleer. Chanticleer the cock, एक मुर्गा है, who is the possession of the lady, of the owner of that farmhouse. The cock was so beautiful and elegant that no rooster on this earth could be compared to him. Another important character in this tale is Pertolot. She is very lovely, very beautiful hen who holds the heart of Chanticleer and shares all his problems. So एक रात को the rooster awakens from the terrible dream of a beast roaming in the yard trying to seize him. The beast in his dream resembles the fox. तो उसके सपने में एक beast आता है जो एक fox जैसा लगता है. He woke up shouting from his dream. तो चिल्लाते हुए अपने सपने से उठ जाता है वो. His lady, that is Pertolot, told him to be ashamed of, कि तुम इतने ज़्यादा वीक हो कि एक सपने से घबरा कर उठ गए. एंड शी सेज टू हर that he is showing such fear that he will lose all the love and all the respect that he has gained till date. And she tells him that he has been dreaming all this because he had eaten too much at night and he needs to take some purgative herbs or some laxatives as a cure for his upset stomach. तो अगर आप लोगों ने कभी इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो मे बी बाय यूजिंग द वर्ड लेक्सेटिव को आप इस रेड एक्सर्प्ट में बोल्ड में देख सकते हैं. लेक्सेटिव वर्ड से आप पता कर सकते हैं कि ये पोइट्री किस पार्ट ऑफ द स्टोरी से ली गई है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर आप स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर मिलेगा जिससे कि आप उस पर्टिकुलर पोइट्री को आइडेंटिफाई कर पाएँ. मैं आप सब लोगों को रीसेंट असाइनमेंट के क्वेश्चंस करवा रही हूँ. ये सिर्फ असाइनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि आपको एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे. सो नेक्स्ट एक्सर्प्ट दैट यू कैन सी इन रेड इज़ माई लव इज़ नाउ अवेक आउट ऑफ हर ड्रीम्स.
So, this stanza is taken from the beautiful poetry called Epithalamion, written by famous poet Edmund Spenser. Edmund Spenser's Epithalamion is an ode written to his bride Elizabeth Boyle on their wedding day in 1594, and the poetry was first published in 1595 in London. So this is the introduction which you have to write for every stanza that has been taken from Epithalamion. उसके बाद आप इन पर्टिकुलर लाइंस को एक्सप्लेन करना शुरू करिए, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पोइट्री एपिथेलेमियन की है बट स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लाइंस का मतलब क्या है, तो एटलीस्ट एक्सप्लेन समथिंग अबाउट एपिथेलेमियन. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. आपको कुछ तो मार्क्स ज़रूर मिलेंगे. सो नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन. In this poem, the poet talks about his lover and her beauty and how she has kept him captivated, कि किस तरीके से एलिजाबेथ बॉयल ने पोएट को यानी कि स्पेंसर को मेस्मराइज किया हुआ है. The poem is about his wife Elizabeth Boyle, and this poem has 24 stanzas which describes the wedding of the poet. The beginning of this poem starts by him asking for blessings for his marriage from various gods. The poet invokes various muses and gods to awaken his bride, and finally she awakens and is dressed for the wedding. He then invokes the sun, praying that its life-giving rays or beams, you can see written over here, will brighten this joyful day without burning his bride's bright skin. The poem moves through the couple's wedding day from their groom's impatient hours before dawn or before early morning to the late hours of night after the husband, that is Spenser, and wife, that is Elizabeth Boyle, have consummated their marriage. The next one is very easy for my students. I keep on repeating all the poetries of John Donne. John Donne की poetries में से बहुत ज़्यादा excerpts आते हैं exams में. So, I wonder by my troth what thou and I did till we loved. These lines are taken from John Donne's poem The Good Morrow. It was published in John Donne's 1633 collection Sonnets and Songs and is written from the viewpoint of an awakening lover and exemplifies the lover's thoughts as he wakes up next to his partner. तो दो लवर्स हैं जो अभी अभी सोकर उठे हैं और उसमें से मेल लवर अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है अबाउट लव. दिस पोइट्री इज़ ऑल अबाउट दोज फीलिंग्स. Now come to explanation. The Good Morrow is one of the metaphysical poems, love poems of John Donne, namely a morning poetry, you can say, the poem or song about love. He has written a large number of poems which he strongly contrasts with his later sacred work. So these lines explains the feelings of two lovers who have just awakened. In the morning, the two lovers wake up. First, the speaker wishes to examine their relationships and therefore asks further questions, reflecting on this time before their love, pleasure, and beauty, and making reference to historic events. एक्चुअली लवर एट प्रेजेंट बहुत ही प्लेटोनिक फील कर रहा है, बहुत ही सोलफुल लव फील कर रहा है अपनी लवर के लिए. उसको ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया अब कंप्लीट हो गई है अपनी लवर से मिलने के बाद, एंड ही इज़ फीलिंग कि इससे पहले हम कहाँ थे. Okay, so in this stanza, he addresses his beloved and asks her to cast her mind back to before they were lovers. जब वो lovers थे इससे पहले क्या करते थे. आप lines देख सकते हैं. I wonder by my troth what thou and I did till we love. तो जब तक हमने प्यार करना शुरू किया उससे पहले आखिर हम करते क्या थे. तो राइटर जॉन डन या स्पीकर अपनी लवर से मिलने से पहले की अपनी पूरी लाइफ को वेस्टफुल मान रहा है. What was their existence like before they met and loved each other? This poetry is clearly a celebration of young love and a very candid, very perfect depiction of two lovers sharing their bodies and souls with each other. Next lines. Damn with faint praise, assent with civil ear, and without sneering, teach the rest to sneer. These lines are from Epistle to Dr. Arbuthnot. The Epistle to Dr. Arbuthnot एक satire poem है written by Alexander Pope, जो कि एक बहुत अच्छे neoclassical poet थे, and this poetry is addressed to his friend John Arbuthnot.
John Arbuthnot was a physician and he was going to die. He was in last stages of his life. This poetry was first published in 1735 and was composed in 1734. When Alexander Pope got to know that Arbuthnot was dying, Pope described this poetry as a memorial, as a dedication towards their friendship. So now come to explanation. Pope wrote this poem dedicating it to Dr. Arbuthnot after coming to know the fact that Arbuthnot was suffering from a fatal disease, he is soon going to die. पोप एक बहुत अच्छे सटारिस्ट थे अपने टाइम के, और एर्बर्टनॉट उनके बहुत ही ट्रू फ्रेंड थे, जो पोप को हमेशा इंस्ट्रक्ट किया करते थे नॉट टू यूज़ नेम्स इन पोइट्री. अगर आप किसी को सटाराइज कर रहे हो तो उनके नाम डायरेक्टली यूज़ मत करो, यू कैन लैंड अप इन ट्रबल. So being a bold satirist, it had been quite usual for Pope to attract rude criticism against him because he used to write directly the names of the people he used to criticize. Dr. Arbuthnot, who was a close friend, had always advised him not naming the people in his satires, for naming whom Pope could land up in prison. आजकल भी ऐसा होता है, अगर किसी का डायरेक्ट नाम ले लिया जाए तो इट कैन बी अ ट्रबल फॉर द पर्सन. यू कैन सेटायराइज इनडायरेक्टली बट नॉट डायरेक्टली. सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर विच पोप रोट दिस एपिसल वॉज टू थैंक द फिजिशियन फॉर हिज कंसर्न. सो पूरी लाइफ तो शायद अलेक्जेंडर पोप ने इस बात को समझा नहीं, बट व्हेन एर्बर्टनॉट वॉज डाइंग ही एक्सेप्टेड दैट एर्बर्टनॉट वॉज राइट. So the expression written over here comes from Pope's satirical epistle to Dr. Arbuthnot and sums up the views of Joseph Addison, one of the most respected literary critics of the day. According to Pope, Addison's method is to damn with faint praise. In particular poetry में Alexander Pope ने अपने ही एक कंटेम्प्रेरी पोएट जोसेफ एडिसन के क्रिटिसाइज़ करने के तरीके के बारे में लिखा हुआ है. डैम विद फेंट प्रेज, एसेंट विद सिविलियर. इट मीन्स टू गिव समवन अ बैड नेम बाय अटरिंग व्हाट अपीयर्स टू बी अ माइल्ड अप्रूवल. कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करना कि लगे ही ना कि वो क्रिटिसिज्म है. सो पोप को ऐसा लगता था कि जोसेफ एडिसन क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं और डीफेम करते हुए क्रिटिसाइज़ कर देते हैं. सो this was the method of Joseph Addison to criticize the people using a mild approval method, but it certainly could be interpreted differently. Sneer word देखिए आप यहाँ पर. sneer word का मतलब है mocking. तो डैम विद फेन प्रेस, एसेंट विद सिविल लियर. सिविल लियर मतलब सिविल तरीके से, सिविलाइज्ड तरीके से किसी को मॉक करना. सो इस पूरी पोइट्री में कहा ही ये गया है कि अलेक्जेंडर पोप बहुत परेशान है कि लोग किस तरीके से उनके फेम को यूज़ करते हैं, किस तरीके से अननेसेसरीली कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, किस तरीके से कुछ लोग अननेसेसरी अलेक्जेंडर पोप को प्रेज़ करते हैं, या आजकल की डेट के हिसाब से बोलें तो मक्खन लगाना. तो अलेक्जेंडर पोप को एक बहुत ही ट्रू ऑनेस्ट पोइट्री पसंद थी. वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि लोग उनकी लिखी हुई किसी चीज़ को अननेसेसरी प्रेज़ करें या अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ करें. सो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोइट्री. आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.